Hi guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to another video on this channel. I think almost after a month I am here sitting and shooting a video and I kid you not, जब मैं नागपुर में भी थी मैं इंस्टाग्राम पे बार बार बोल रही थी, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो वहाँ, कि I can't wait to get back to Mumbai and just wait to start shooting again. I was literally waiting to do this. पिछले पूरे महीने एक्चुअली अक्टूबर 20 days in October I was in Nagpur. But those of you all who do not know, मेरे नाना जी जो है उनकी डेथ हो गई थी अक्टूबर में, and the whole month of October was mad for us, mad. And I thought before I come here and start putting other videos, you all of you all who sent me such warm messages, you all deserve a life update. तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा था. So I'm just going to talk about the last month today. The whole October was so crazy, I can't tell you. October is my birthday month. It's one of my most favorite months ever. मेरा enthusiasm is up the roof in October right from the first. ठीक है, but इस बार बहुत ही weird महीना था. So my grandfather tested positive for COVID and we got a call from Nagpur कि ऐसा ऐसा हुआ है and उनको ICU में admit कर दिया है. But seeing his health and his condition, he's been a very fit and strong man and he was 87 but you couldn't tell, इतने fit थे वो. मतलब उनको देखकर तुम्हें लगता 75 है. वो सब देख के हमें लगा 2-3 दिन में बाहर आ जाएंगे, बट वी डिड नॉट नो दैट थिंग्स वर जस्ट गेटिंग वर्स फ्रॉम दैट डे ऑन. सो इनफैक्ट उनकी जो पहली रिपोर्ट थी, एंटीजन टेस्ट जो होती है, वो पॉजिटिव आई थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और फिर उनकी जो RT-PCR है वो नेगेटिव आई थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज पॉजिटिव. एंड जैसे हमें नागपुर से फ़ोन आया कि ही इज़ इन द ICU एंड हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स, वी फ्लू डाउन टू नागपुर. पहले तो कोविड के टाइम पे फ्लाइट लेना इज ओनली डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी एंड नॉट फॉर मोर देन मी. आई वाज वरीड अबाउट माय मॉम, सो मी एंड माय मॉम बोथ फ्लू डाउन टू नागपुर. हम लोग वहाँ गए और हम लोग को एक्चुअली वी वर ऑल होपिंग अगेंस्ट होप दैट ही इज गोइंग टू गेट बेटर एंड कम आउट, बट एवरी डे ही केप्ट गेटिंग वर्स एंड इट्स extremely sad that after a week he passed away. So yeah, he did live a long life, so after a point of time with your grandparents you feel like, I'm sorry, this is going to happen today. Okay, after a point of time with your grandparents, they're old, they're going to die, पर जिस तरह से how my nana, I don't know how did he get infected, और सिम्टम्स इतने कुछ एविडेंट वाले थे नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला कि यू हैड टू एक्ट अपॉन देम. ही डिड नॉट हैव एनी मेजर सिम्टम्स एंड सडनली हिज कंडीशन वर्सनड. और सडनली फॉर अस इट वाज लाइक एक हफ्ते पहले फोन कॉल आया है एंड एक हफ्ते में ही इज गॉन. सो वी जस्ट कुडंट प्रोसेस इट कि हुआ क्या है. बिकॉज आई रिमेंबर जस्ट 2 days बिफोर ही गॉट हॉस्पिटलाइज मैंने उनको फ़ोन किया था. माझा एपिसोड पहा TV वर, मेरा मस्त महाराष्ट्र का जो एपिसोड आया था वो जी मराठी पर आने वाला था एंड इट वॉज अबाउट नागपुरी लैंग्वेज. सो आई थॉट आजोबा विल बी सो हैप्पी टू सी मी शूटिंग इन माई ओन सिटी, टॉकिंग द लैंग्वेज, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि जी मराठी पे भी था, which is a channel he would generally watch. So I called him to say, आज episode पहा, and that day he said something like नंतर मोबाईल वर पाहायला तर नाही चालणार का, and I did not know why was he saying that, but I said नाही TV वरच पहा. And then I thought I will check with him 1-2 दिन बाद कि कैसा लगा क्या लगा. But 2 days later he was hospitalized and after that I never got to speak to him. I grew up with my nana nani, with my aji azoba, so the reason मैं मेरे आजी आजोबा से इतनी क्लोज हूँ is because my parents were working, so they were like my part time parents. They've literally raised me in the absence of my parents. मतलब स्कूल से आने के बाद मैं उनके घर जाती थी, उनके घर खाना खा के फिर अपने घर जाती थी, तो literally grown up with them, इसीलिए मेरा अटैचमेंट था. And to sit in आजोबा's house without him felt so weird. मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था that he's gone, he's died. Like it just did not feel real. For the first 2 to 3 days, I think none of us had processed it. Like everybody kept feeling so weird about him being gone like this. So yeah, that happened. फिर उसके बाद, because this was a COVID death, we all got tested to be safe. And उस टेस्ट में हुआ ये that my आजी की टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आई, मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई, मेरे एक अंकल आंटी की टेस्ट पॉजिटिव आई.
So उसके बाद तो मतलब something else only started. It was like we didn't even get any time to grieve. मतलब आजोबा के लिए कुछ वो ही ढंग से प्रोसेस नहीं हुआ था और ये होना शुरू हो गया. तो मतलब वो जो 15 दिन थे, they were such madness, I can't tell you. It was like अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हो रहा है. So there was no time to grasp anything. So after a point of time, I think we all were like, including me, I was so blank. I did not know what to feel anymore. And जब मेरा COVID test भी positive आया, I was actually fearing वैसा होगा because I was constantly with my आजी taking care of her, क्योंकि मेरी आजी is very old, she's bedridden, she's like a child, she can't do anything on her own, so she needs to be fed, you know, given a bath, everything. तो मैं उनके साथ पूरे टाइम थी और मुझे लग रहा था कि मेरा पॉजिटिव आएगा और वो हुआ. एंड आई वाज एक्चुअली मोर देन वरिंग अबाउट माई हेल्थ, आई वाज वरिड थ्रू आउट. जब से कोरोना शुरू हुआ है मुझे ना, आई हैव एंग्जाइटी विच आई स्पोकन अबाउट टू मेनी टाइम्स, क्लिनिकल एंग्जाइटी. तो उसी में एनी वे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती रहती है. एंड वेन ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, यू नो, एक इमोशनली टर्बुलेंट टाइम ऑलरेडी था, उसमें एंग्जाइटी भी थी, उसमें पॉजिटिव टेस्ट भी आ गई. एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, लाइक आई जस्ट डिड नॉट नो व्हाट टू फील एनीमोर. क्रेजी 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 मंथ. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आजी की तबीयत, आई एम सो ग्लैड, इज गुड नाउ. शी हैड गॉट हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज एट हर एज इट वॉज, यू नो, वी डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया. 10 दिन वो हॉस्पिटल में थी और फिर वो घर आई एंड शी इज़ नाउ फाइन. But overall this month has been so emotionally taxing, not just for me but for everybody in the family. It's been one crazy month. इसलिए मैं एंड में इतनी पक गई थी because I was so blank. I did not know what was happening, what am I feeling, what am I processing. I was like I just can't wait to get out of here and come to Mumbai. Although मेरा आधा जो है दिल जो है अभी भी वहीं अटका हुआ है आजी के साथ, because I felt so bad while leaving her alone. I was like, of course there are people, मेरे घर वाले हैं to take care of her. But you know, when you have that connect with somebody and knowing that she's going to be so alone without Azoba, it was like a crazy time. But yeah, one thing I have to tell you guys, इतना पागलपन कर देने वाला समय था. And if there is one thing that has helped me in this madness that has happened in October, was meditation. I think if I wasn't meditating, I would have lost my mind. I was literally meditating every single day because मतलब माहौल ही ऐसा था कि you had to do something to center yourself and ground yourself and, you know, just be put together basically. So yeah, I have done tons of guided meditations in the last 20 days and breath work. I thought I should come here and give you this live update क्योंकि तुम लोगों ने इतने sweetly, when I put that post for my Nana saying, you know, pray for him, because honestly I'm one of those people who believes in, you know, a lot of people praying together for something can manifest it, and you know, collective consciousness and all of this is something that I believe in. और इसलिए मैंने post भी डाला था कि please take a minute and pray for him, maybe some miracle happens, but it didn't. But I have to thank you guys, thanks a lot. तुम्हारे बहुत ही sweet messages के लिए made me feel very 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 good in a very difficult time. And yeah, I'm back to Mumbai and I can't wait to start shooting again and doing all the fun videos. पर ये एक update बनता था तुम्हारे लिए. And maybe I'll do a video about Azoba. I'll do something, I don't know yet क्या करूँगी मैं. But if you haven't watched a vlog that I did with Azoba, can you imagine? मैं मार्च में नागपुर में गई थी. मैं जनरली नागपुर में जून के पहले कभी नहीं जाती हूँ, और इस साल in 2020 it happened that I was called for this show का shoot and I went to Nagpur in March, and very like out of the blue I recorded a vlog with Aji Azoba which wasn't even on my mind. मतलब मैं just घर में गई and I just removed my phone and started shooting. So and thank God I did that, because that's at least in one video my Aji and Azoba are both on my channel. So वो video जो है वो मैं link up करने वाली हूँ. Go and watch it. And yeah, maybe I'll also watch it after shooting this. That is my last memory with Azoba together, because after that I saw him after he was gone. So yeah, on that note guys, thank you so much for being around, for sticking around. And yeah, I'm going to come back with some real fun videos very soon on the channel. Until I see you guys again, you take care. Bye bye.